Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 8 and the name of our unit is Professions और ऑक्यूपेशंस अराउंड अस, यानी कि जो मुख्तलिफ पेशे हमारे इर्द गिर्द लोग इख्तियार किए हुए हैं, हम इस यूनिट में उनके बारे में पढ़ेंगे. टुडे इज़ द लेक्चर नंबर 1, जिसमें बच्चे मुख्तलिफ प्रोफेशंस जो हैं उनको बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स आइडेंटिफाई कर सकेंगे, उनको पहचान सकेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. सो इन टुडेज लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई सम प्रोफेशंस from the pictures like teaching, farming, medicine, etc. So my dear students, आज बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि बच्चे मुख्तलिफ जो पेशे हैं उनको पहचान सकेंगे. जैसे कि टीचर, उस असातिज़ा को आप पिक्चर देख के बता सकते हैं. वाइट बोर्ड है, जैसे कि मुझे अगर आप देखें तो आपके ज़हन में इंस्टेंटली आता है दिस इज़ द टीचर. सो इस तरीके से आप जब किसी को देखते हैं, सो बाय लुकिंग एट इट्स पिक्चर यू कैन टेल कि इसका क्या पेशा हो सकता है या इसका क्या प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन हो सकता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट्स स्टार्ट विद एन एक्टिविटी. सो मैं अब आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी. आपने इन पिक्चर्स को वन बाय वन बहुत गौर से देखना है. सो सबसे पहले स्पेस में एक स्पेस सूट आदमी ने पहना हुआ है एंड ही इज इन द स्पेस. व्हाट डू यू थिंक, हु इज ही? कौन बच्चा बताएगा मुझे? ये एक एस्ट्रोनॉट है. सो जो भी शख्स स्पेस में जाकर काम करता है उसको हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं, एस्ट्रोनॉट. एंड दिस इज डॉक्टर. किसने बताया? वेरी गुड. नाउ क्विकली टेल मी, हु इज ही? इसने सर पे कैप पहनी है, हाथ में बहुत सारे मैप्स हैं और ये एक बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं. सेंड हु इज ही? ही इज एन इंजीनियर. वेरी गुड. ओके. ब्लैक बोर्ड and a person is teaching. He is a teacher. And here you can see a person that flies a plane is a pilot. So my dear students, आपके सामने बहुत सारे प्रोफेशंस आ गए हैं. तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मुस्तकबिल में आप कौन सा शोबा जो है वो इख्तियार करेंगे? कुछ की पिक्चर्स मैंने आपको दिखाई है. अगर इसके अलावा आप कुछ बनना चाहते हैं तो मुझे बताएं. वेरी गुड. अच्छा, मैं अगर बताऊं ना तो मैं हमेशा से टीचर ही बनना चाहती थी और देखें मैं टीचर बन भी गई. तो आप में से कौन कौन टीचर बनना चाहता है? वेरी गुड. टीचर बनना बहुत अच्छी बात है. ओके, सो वेरी गुड. अपने पेरेंट्स के साथ जरूर डिस्कस कीजिएगा, फेलोज के साथ डिस्कस करें कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, कौन सा पेशा या प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन आप लोग इख्तियार करना चाहते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, द प्री रीडिंग क्वेश्चन. सो क्विकली टेल मी, व्हाट डज योर फादर डू? आपके वालिद साहब क्या करते हैं? ऑफिस जाते हैं. ऑफिस, कौन से ऑफिस में क्या काम करते हैं? ओके, वेरी गुड. एंड व्हाट डज योर मदर डू? आपकी अम्मी क्या करती हैं? ममा क्या करती हैं? घर पे रहती हैं या कहीं बाहर जाके काम करती हैं? व्हाट डज शी डू? ओके, वेरी गुड. इफ शी स्टेज एट होम देन शी इज अ हाउसवाइफ. और अगर वो बाहर जाके कोई काम करती हैं तो देन आस्क हर इफ शी इज अ डॉक्टर, टीचर और एनी अदर थिंग दैट शी डू. Okay, my dear students, now is the time for reading. So quickly open page number 62 in your GK2 books. I hope everybody has opened the page. So my dear students, let's start the reading. Put your fingers where I will read. Okay? Professions. So सबसे पहले हम ये जानते हैं कि basically profession क्या होता है. उर्दू में इसको कहते हैं पेशा. Profession is a paid occupation which you adopt after getting special educational training. We see many people working around us. They have different professions, include farming, medicine, shopkeeping, law, teaching, pilot, etc. So my dear students, basically profession जो है वो एक ऐसा शोबा या कोई ऐसा पेशा होता है जिसको आप कोई स्पेशल ट्रेनिंग लेने के बाद, एजुकेशनल ट्रेनिंग लेने के बाद, पढ़ाई करने के बाद इख्तियार करते हैं. और जब आप उससे मुंसलिक कोई भी काम करते हैं, जैसे कि मरीज़ों को चेक करना या लोगों को पढ़ाना या कोई बिल्डिंग तामीर करना, तो इन रिटर्न आपको उसमें पैसे भी मिलते हैं.
सो इस तरह के काम को हम कहते हैं प्रोफेशन, और हर प्रोफेशन का एक नाम होता है, जैसे कि डॉक्टरेट, इंजीनियर, मेडिसिन, टीचिंग, ये एजुकेशन, ये तमाम जो है डिफरेंट प्रोफेशंस हैं। सो कुछ प्रोफेशन जो हैं वो आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि किसान, दवाइयों से मुंसलिक कोई शोबा, शॉपकीपिंग यानी कि दुकानदारी, इसके अलावा कानून से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, या पायलट जो कि हवाई जहाज उड़ाता है, ठीक है। So now it's time for an independent activity which is given in your book. Independent activity number 1, observe the pictures and identify the professions, write their names in the given space. So my dear students, अब one by one मैं आपको pictures दिखाती हूँ। एक इंसान है, एक शख्स है जो कि खेतों में काम कर रहा है, cutting the crops. So who do you think is he? He is a farmer. So इसका क्या पेशा है? He is a farmer. Next is a man is checking a boy. I think this boy is ill. So what is he do? आपको क्या लगता है कि इसका क्या प्रोफेशन है? He is a doctor. Very good. Pick up your pencils and start working on your book, okay? And this man is teaching maths to this girl. So आपको क्या लगता है? Who is he? He is a teacher. Very good. Okay, next, this man is selling some fruits or vegetables and he is a shopkeeper. दुकानदार भी कहते हैं इसको उर्दू में. And she is a lawyer. कानूनदान है ये, इसने आप ये देखिए कोट पहना हुआ है. And he is flying an aeroplane, then he is a pilot. Okay, my dear students, for home activity number 1, there are many other professions. Find out some more professions, at least 5, and also write down their jobs, paste the relevant pictures as well. So, my dear students, इन pictures के अलावा और भी बहुत से professions हैं. आपको उनकी pictures collect करनी है और आपको उस profession का नाम भी लिखना है picture के आगे, जैसे अभी हमने किया है, ठीक है? So this will be your homework for evaluation. Quickly answer the following questions orally. में आपने इनको जवाब देना है, written नहीं करना. So name some professions you see around yourself. आप अपने इर्द गिर्द जो कुछ professions या पेशे देखते हैं उनमें कुछ के नाम बताएं. Very good. Okay. What does a doctor do? He treats sick person. Very good. What does a pilot do? He flies an aeroplane. What is the job of a lawyer? He works in the law department. What does a teacher do? He or she teaches people. What is the job of a farmer? He works in the fields. And what does a shopkeeper do? He sells different things. So a shopkeeper sells different things. Okay, my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from Bio Teacher. So my dear students, write down your name and the roll number, and then cut and paste the names of the pictures of the profession. So आप यहाँ पे cut ना करें, you can write it. This is a doctor, farmer, pilot, teacher, this is a cobbler, and this is a shopkeeper. Doctor, cobbler, teacher, shopkeeper, farmer, pilot. So this is a shopkeeper. So pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the homework. For homework, you will do independent activity number 1 given on page number 62. And you will do home activity number 1 given on page number 62. Collect the pictures and paste them in your notebook. Also write the name of the profession. And complete the puzzle section D given on page number 67. So this is the puzzle section.
that you have to complete in your books. ठीक है, इसमें आपको बताना है number 1 is a pilot, then number 2 is a doctor, number 4 is a farmer. So this is how you will complete it. ठीक है, this is a shopkeeper and teacher. ठीक है, so that is how you will complete the puzzle. So my dear students, the wrap up of the lesson is today you have identified different professions around you. ऐसे लोग जिनके पास special training होती है in a particular field and they earn money from that is called a profession. इनमें doctors, teachers, pilots, farmers, lawyers, engineers, builders, ये तमाम लोग जो हैं वो शामिल हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारे professions हैं जो कि आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.